Hello, friends. I welcome you all to this weekly roundup of current affairs. इसमें हम 6 जुलाई से 11 जुलाई तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पे हम ध्यान देंगे। हमने सारे न्यूज़ को कवर नहीं करने की कोशिश की है। हमने सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन हम उस पॉइंट्स को लेने की कोशिश किए हैं। तो जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू एज टू व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया है। देन एक टर्म आजकल चला है एलिमेंट, तो ये कई बार आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, वेदर इट इज अ सोशल मीडिया ऐप, वेदर इट इज अ गेम विच हैज कम अप, और some whether it is a hardware, whether it is software. देन वी विल सी आजकल कोविड-19 का बहुत ज़्यादा चल रखा है प्रॉब्लम। तो इसको लेकर के जगह जगह हम कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, बफर जोन बना रहे हैं। तो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में क्या अंतर है हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देयर आफ्टर विल सी द व्हाट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मैथ वर्क भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामिनेशन एज वेल एज जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछे जाते हैं। और खासकर जब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कोई हो देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। So the first is that President Donald Trump's government has formally notified to United Nations of its decision to withdraw from WHO, that is World Health Organization. So President Donald Trump, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को बता दिया है कि अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेयर प्ले नहीं किया। वो चाइना के साइड चले गए फॉर, और जो वायरस आउटब्रेक था उसके बारे में सही से जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है दे डाइड। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे प्रिलिमिनरी में पूछ सकते हैं कि who was the largest funder to the World Health Organization? And remember, अमेरिका जो था it was the largest funder to the World Health Organization. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। Now second is that element जो हमने आपसे कहा था, it is actually India's first social media super app. आप बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं। नाउ एलिमेंट जो है वो इंडिया का फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप है और इसे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने 5 जुलाई को लॉन्च किया है। नाउ व्हाट डज दिस ऐप प्रोवाइड्स? नाउ दिस ऐप, through this app users can stay in touch with free video calls, free audio calls, vibrant feed and private and group chat. Now ये पहले भी है, जैसे व्हाट्सएप पे भी ये फीचर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी ये सारे फीचर्स हैं, बट दे ऑल आर फॉरेन एप्स। दिस इज द फर्स्ट इंडियाज इंडिजिनस सोशल मीडिया सुपर ऐप। इससे डाटा प्राइवेसी में भी बहुत ही ज़्यादा हमें मदद मिलेगी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनेशंस में, मेंस में 20 वर्ड्स में पूछ देते हैं या डिस्क्राइब करने दे देते हैं। तो यदि आपसे पूछें कि इन 20 वर्ड्स व्हाट इज एलिमेंट, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप थ्रू विच free video calls, audio calls and vibrant feed and private and group chats can be made, and it is a step towards Atmanirbhar Bharat scheme. Now another very important thing which is required to be known is that Himachal Pradesh has become the first state in the country where all the households have LPG gas connection. Remember, this is very important क्योंकि हम यदि वुड जलाते हैं या जो उपले हैं उसको जलाते हैं तो उससे एक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, हेल्थ हैजर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है और वो हमें घर में भी परेशानी करता है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। नाउ LPG gas connection is one of the major
पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वो चाहते हैं कि हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन हो। तो हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। नाउ हिमाचल प्रदेश हैज बीन हेल्प्ड बाय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कई बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो रिमेंबर, इट इज a scheme where free gas connection is being provided by the central government to the poor household. Now, हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी चला था, जिसके अंतर्गत भी जो हिमाचल प्रदेश में जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किया गया था। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है, यदि पूछें विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर ऑल द हाउस होल्ड्स हैव एलपीजी गैस कनेक्शन, देन इट इज हिमाचल प्रदेश। Now another thing which is important is what is containment zone and what is buffer zone. Now containment zone जो एपी सेंटर है, जहां पर कोविड के केसेस पाए गए हैं, उस एपी सेंटर से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो जोन बनेगा, दैट इज योर कंटेनमेंट जोन। नाउ दिस जोन इज मोस्ट प्रोन टू दिस वायरस इन्फेक्शन बिकॉज हियर द रियल केस हैज बीन फाउंड आउट। तो इसलिए इस कंटेनमेंट जोन में जो गाइडलाइंस हैं या इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल, इस जोन में अनचेक्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल विल नॉट बी देयर। देन only provision for essential services and medical services will be provided. Thermal screening at the entry and the exit point throughout will be there. Then all the roads will be guarded by the police personnel so that these things are actually implemented. And then the public transport will not be allowed, and if any private vehicle wants to move, then it should have valid pass for it. So remember that containment zone, it is demarcates area of 3 kilometer radius around the epicenter as containment zone. Now another is buffer zone. तो जो कंटेनमेंट जोन है, ये एपिसेंटर है, एपिसेंटर से 3 किलोमीटर रेडियस में दैट इज कंटेनमेंट जोन। नाउ फ्रॉम कंटेनमेंट जोन 5 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया होगा, दैट इज योर बफर जोन। This will be your buffer zone. An additional area of 5 kilometer radius around the containment zone. Now, in this buffer zone, there will be restrictions, but they will not be as strict as those under the containment zone. Now, for example, in this there will be that face masks are to be used, social distancing norms are to be done, then no mass gathering or meeting will take place. So, and community awareness will be done so that it does not spread. Now another important is your Riva solar power project. Now आपको पता होगा कि we all are moving towards environment friendly and renewable energy source. Now in this, and remember, many a times state PCS as well as UPSC have asked to write short note on renewable energy resources. Now in this, solar power is one of the most feasible and important renewable energy source. तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो रीवा में इनॉग्रेट किया है। रीवा इज इन मध्य प्रदेश, कई बार ये आपसे पूछ भी सकते हैं। नाउ दिस इज अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट और 750 मेगावाट का टोटल इसका कैपेसिटी है। एक्चुअली 3 यूनिट्स हैं, ईच ऑफ 250 मेगावाट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि रीवा, actually this power project, Riva solar power project, and remember it is one of the largest, not the largest, but one of the largest single site solar power plant in Asia. Now ये जो रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा, it is
it will provide 24% of the energy resource to the Delhi metro, and rest 76% will be used by the state. This is the first solar power project which will provide energy outside the state in which it is. Now, आपको ये भी जानना होगा कि it has been made in collaboration with World Bank. Actually, World Bank has provided financial support for it, and then it is a part of. Now, one important question that can be asked is that what is our goal regarding this solar energy power? So हमारा goal by 2022, which will be the 75th year of our Indian independence, which we got in 1947. तो 2022 तक हमें अचीव करना है 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी. So this is also an important fact. नाउ जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करेंगे, एंड दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु. तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु एक्चुअली 5 मई 2020 को, डेट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट हियर, बट रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी. और इसका एम क्या था कि जो बाहर में हमारे सिटीजन फंसे हुए हैं आउटसाइड इंडिया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, उनको इंडिया में वापस लाने का ये ऑपरेशन था. इट वाज अ पार्ट ऑफ launched by Indian Navy. It was a part of national effort to bring back Indian citizens from overseas by sea amid COVID-19 pandemic. तो इसके थ्रू हम 3,992 इंडियंस, इतना आपको एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अराउंड 4,000 Indians have been brought back to their home from outside. इसमें जो नेवल शिप्स which were engaged was शार्दुल, मगर, जलस्वा एंड ऐरावत. रिमेंबर कई बार वो यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो ये पूछेंगे कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन से इसमें से नेवल शिप इन्वॉल्व नहीं थे, या कौन कौन से थे. तो रिमेंबर इट इज शार्दुल, मगर, जलस्वा, ऐरावत. These 4 were involved. It was 55 days. और इससे पहले हमने इंडियन नेवी ने ऑपरेशन राहत किया था, जिसमें कि हम यमन से लाए थे ओवरसीज सिटीजन्स, एंड ऑपरेशन सुकून किया था जिसमें हम बेरूत से लाए थे इन 2006. आफ्टर दैट, आजकल बिकॉज ऑफ कोविड देयर इज लॉट ऑफ फूड ग्रेन प्रॉब्लम, पुअर्स को अनाज नहीं मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की गई थी, और कोविड के को देखते हुए इसे अनदर 5 months के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2020. इसके अंतर्गत इन दिस स्कीम 203 लाख टन्स ऑफ ग्रेन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 81 करोड़ पीपल फॉर नेक्स्ट 5 months. Remember friend, it is the biggest program in the world that will run for 8 months and will include every section of society. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में यदि आपको 20 वर्ड में लिखना पड़े तो आपको लिखना चाहिए, इट इज द बिगेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड that will provide food grains to 81 crore people, and total 203 lakh tons of grains will be distributed. Now, another important news is that Indian Railway has decided to transform itself into net zero carbon emission transportation network by 2030. तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि which organization department has decided to convert itself into net zero carbon emission network. So remember, Indian Railway has decided net zero carbon emission transportation network means कि जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे, the amount of carbon that will be emitted will also be the amount of carbon which will be again absorbed back through the plantation or other means. Now, how we are going to do it? How we are going to transform Indian Railway into a net zero carbon emission transportation network? Now, this we are going to
do by installing solar power plants. Now solar power plants we will जो रेलवे के वैकेंट लैंड हैं, अनयूज्ड लैंड हैं, या जो रेलवे के जो बिल्डिंग्स हैं, उस सब पे हम सोलर जो है सोलर टॉप पावर प्लांट्स लगाएंगे, और ये हम कर रहे हैं भेल के साथ मिलकर। सो इट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीना इन मध्य प्रदेश। उसमें इंडियन रेलवे ने एक भेल के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट भी चालू किया है, दैट विल जनरेट 1.7 megawatt of solar power. So please remember that Indian Railway has decided to transform itself into net zero carbon emission transportation network by 2030. This they are going to do also as a part of Atmanirbhar scheme. Now the last, which is the map work, that is Dihang Patkai Wildlife Sanctuary. It was in news last week. ये न्यूज में था, और दिहांग पटकाई जो है it is in state of Assam. Remember friends, they may ask you in this prelims as well as in map work that Dihang Patkai Wildlife Sanctuary कहाँ है? तो दिहांग पटकाई Wildlife Sanctuary आसाम में है. Why it was in news? It was in news because Assam government has decided that it will request the central government to convert this wildlife sanctuary into national park. So just a brief overview of what all we have done in this week. First of all, we saw that America has decided to withdraw from WHO, and formal notification for same has been sent by President Donald Trump to the United Nations. And America is the largest funder to the World Health Organization. Then we saw that Element, it is India's first social media super app through which free video calls, audio calls, vibrant feeds, and private group chats will be done. And it is a part of Atmanirbhar Bharat scheme. Then Himachal Pradesh has become the first state in the country where all the households have LPG gas connection, and Pradhanmantri Ujjwala Yojana provides free gas connection to the poor household. Then we saw the difference between containment zone and buffer zone. Containment zone comprises of an area of 3 kilometer radius around the epicenter. The restrictions in this zone are very strict in order to prevent the spread of the COVID-19 virus. While those areas which lie beyond this 3 kilometer radius, an area of 5 kilometer radius around this containment zone is called the buffer zone, and in this the restrictions are not so strict, but yet there are restrictions in order to stop the spread of this coronavirus. Then we saw that as a part of that our renewal project scheme, where by 2022 we want to generate 100 gigawatt of solar power. Riva solar power project has been inaugurated by Prime Minister. In which it is 750 megawatt, and 3 units are there of 250 each. It has been made in with the financial assistance of World Bank, and it will provide 24% of the power generated to the Delhi metro services, and 76% will be supplied to the state of Madhya Pradesh. Then we saw Operation Samudra Setu. It is operation which is launched by Indian Navy. In this, for 4 Indian naval ships, Shardul, Magar, Jalaswa, and Airavat has participated, and around 4,000 Indians have been brought back to home amid this COVID-19 pandemic. Then Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana has been got an extension of 5 months from July to November, and in it 203 lakh tons of grains will be distributed among 81 crore people for the next 5 months, and it is the biggest program in the world that will run for 8 months and will include every section of society. Thereafter, Indian Railway has decided to transform itself into net zero carbon emission transportation network by 2020, and it is a part of Atmanirbhar scheme,
How it will be tried to be done is that we will install solar power projects on the unused land as well as rooftops of the railway in collaboration with BHEL, that is Bharat Heavy Electricals Limited, project in Madhya Pradesh at Bina, which consists of 1.7 megawatt power have been solar power project have been started. Then Dihang Patkai, it is a wildlife sanctuary in Assam, and Assam government has requested the central government that to upgrade it to the national park status. Thank you, friends. Next week we will try to cover the other aspects. Thank you.